Okay, so let's begin. कोई क्वेश्चन है पिछले लेक्चर किसी का? Okay, कोई सवाल नहीं है? समझ आ रही है चीजों की कि नहीं? तो पहले मैं पूछता हूँ। आज मुनीब के अलावा किसी और से पूछते हैं। आपका क्या नाम है? बाकिर। आप एमएस के हैं या बीएस के स्टूडेंट? बीएस के। तो आपका क्या ख्याल है, डेंसिटी मैट्रिसेस की क्यों जरूरत है? यूजुअल लैंग्वेज जो डॉक्स की है वो भी आप काफी सारे कोर्सेज में यूज कर रहे हैं। व्हाई डू वी रियली नीड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर अस? क्योंकि फिजिक्स में जब भी कोई मैथ की नई चीज इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसकी कोई वजह होती है। इट्स नॉट जस्ट मैथ फॉर द सेक ऑफ मैथ, राइट? सो देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर लर्निंग अ न्यू मैथमेटिकल टूल। आपका क्या नाम है? जिशान। जिशान, आप बताएं। ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट के मैं सिर्फ एक करेक्शन करूंगा। आपने कहा कि हमें सुपर पोजिशन का पता होता है। हमें आई थिंक आप इस सेंस में बात कर रहे हैं कि लेट्स से देयर आर टू पॉसिबल स्टेट्स द सिस्टम कैन बी इन। वो कोई लेट्स से किसी दो स्टेट का सुपर पोजिशन हमें उसका पता है, लेकिन हमें पता नहीं कि स्टेट कौन सी है। ठीक। तो लेट्स से अब्दुल्ला, आपका क्या ख्याल है? व्हाई डू वी नीड डेंसिटी मैट्रिसेस? क्या एडवांटेज? आप मतलब एप्लीकेशन की एक की बात करेंगे कम्युनिकेशन में, लेकिन जो उस चीज का हार्ट है, हार्ट ऑफ द रीजन वहां पे नहीं जा रहे। हैदर, आपका क्या ख्याल है? सॉरी, बिलाल। आपका नाम बिलाल हैदर है? खाली हैदर, जी जी, सॉरी फॉर मिक्सिंग अप द नेम्स। हम्म। सबसे आपने देखा लेक्चर पिछला? अभी नहीं देखा? तो देख लेंगे क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम है। सादैन, अली सादैन।
सही है. So ये important point है. पहले तो याद रखें कि you can do everything with your previous language. जो डेंसी मैट्रिसेस का फायदा है वो ये है कि it gives you more compact, notation and uh, an intuitive way of thinking about what's going on when you have mixed states. So उसके लिए पहले तो ये है कि we should be absolutely clear what is a pure state and what is a mixed state. So a pure state is essentially any, cat state that you write. All cat states that are legitimate, states कि वो vectors हैं of unit length और वो आपने इन जनरल सुपरपोजिशन लिखा है जो उस सिस्टम की पॉसिबल आइगन स्टेट्स उनकी फॉर्म. ठीक है. सो ऑल दोज स्टेट्स आर प्योर स्टेट्स. when we have a situation when our system can be in one of one of more than two pure states, then we say it's a mixed state. और वो जरूरी नहीं. पहली बात तो ये है कि जैसे पिछले लेक्चर से आपको कहीं ये ना लगा हो कि वी नीड टू हैव मेनी पार्टिकल्स. आप लेट्स से एक प्रेपरेटर है जो कि आपका सिस्टम जो है ना वो एक किसी स्टेट में प्रिपेयर करता है. फर्ज करें हाइड्रोजन एटम को लेते हैं. ठीक है. आपका की पॉसिबल प्योर स्टेट्स क्या है? सिस्टम कैन बी इन ग्राउंड स्टेट, it can be in first excited state, it can be in second excited state and so on. But there's another pure state. System can be in a linear superposition of ground state and the first excited state. Let's say you say 1 over square root 3 and times the state of ground state plus 2 over 3 square root times excited state. That's also a legitimate pure state. ठीक है. Pure state को आप कहीं ये ना समझे कि सिस्टम को आइगन स्टेट में ही होना है. जो सुपरपोजिशन स्टेट्स हैं they're also pure states. All those states are pure states. मसला ये है उस वक्त पैदा होता है जब हम कहते हैं कि सिस्टम प्योर स्टेट में नहीं है कि आपके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है. एक बंदा आया वो या तो उसको ग्राउंड स्टेट में प्रिपेयर कर गया या उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में या उसको उन दोनों की लेट्स से किसी एक सुपरपोजिशन में. सुपरपोजिशन इनफिनिट पॉसिबिलिटीज है. लेट्स से कोई एक सुपरपोजिशन स्टेट प्लस स्टेट कर दी उसने हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ जिसमें दोनों को आप करते हैं. अब you want to see कि what happens to that atom when you do something to this. अब उसके लिए एक तरीका तो ये है कि you say okay, I don't know density matrices, I'll start by assuming that the system is in ground state. Then I'll do everything with it and predict कि अगर इस पे आप लाइट साइन करें या इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखें या इस पे कोई पल्स भेजें तो ये होगा. लेकिन आपको तो पता नहीं था कि सिस्टम ग्राउंड स्टेट में. अब आप हो सकता है सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में तो आप कहेंगे ओके let me keep this prediction here and let me start over again. Now I'll assume that the system was in the excited state. You do the same kind of operation with it and you give a prediction. Okay. You can do it for another pure state and so on. So for each of the pure state you do the math. जो density matrix formalism है that helps you avoid this thing. You can write that probabilistic state के पता नहीं ground state में है या first में है या superposition state में है with a density matrix that can take care of this thing as a whole. And now you have a mathematical tool, density matrix, that represents the state of the atom, where no atom is not in one of the pure state, but it's an ensemble of pure states. That's the word we use. Ensemble mean that it's classical probabilistic sum in a way. कि वो 10% probability ground state में है, 30% probability first excited state की है, 60% probability rest जो superposition state उसकी है. So that's why we need density matrix. Wherever there are classical probabilities coming into play, then density matrix makes your life easy. Okay. Then it's important to keep in mind that why do we need it. और जैसे आप में से कुछ लोगों ने communication की बात की, so communication में जो quantum communication है उसमें हमें density matrix को इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि in communication is all about probabilities. Information, as we saw in the lecture number 1, is actually related to the probability of things. So that's why it's a probabilistic science.
sorry, not a probability, it's an exact science, but that deals with, the probabilities of these things. So density matrix formalism helpful. लेकिन सिर्फ communication में नहीं, actually any real life quantum system is generally never in a pure state because of its interaction with its surrounding. और आज जो है, hopefully you will get to know why the surroundings can make a system look probabilistic when you're just looking at part of the system. So today actually is perhaps one of the most important lecture in terms of introducing the concept of where the noise comes from. Okay, really speaking, all noise, even the classical noise, where the noise is coming from. Hopefully by the end of this lecture, you'll be able to see. And this is one application of the density matrix formalism that we'll see today. And we'll begin with the simple theorem that helps us set the stage for this thing. The theorem helps us write what we call Schmidt decomposition of pure states. Let me emphasize this because this theorem is applicable only to the pure state. And since it's, for pure states, you can express this thing just using the old bracket language. Even though it has application for non-pure states as well, but the theorem is for pure states. It's important to remember. So the theorem says, sorry, I never get used to not breaking chalk. I don't know. 10 साल हो गए बल्कि कितने साल हो गए पढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी में, पता नहीं 15-20 साल हो गए जी। नहीं 25 नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था 2006 में आई थिंक, अगर उससे पहले वाला निकाल दें तो। एनीवे, स्टार्टेड इन नस्ट में मैंने पढ़ा था 1.5 साल, फिर कायदे यूनिवर्सिटी में 2 साल, एंड देन वेंट फॉर पीएचडी पोस्ट डॉक, और फिर उसके बाद यहाँ। एनीवे, सो थ्योरम ये है कि एनी bipartite state, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ बाईपार्टाइट का क्या मतलब है, बल्कि let me write it here. Any bipartite pure state can be written as in sort of a standard way. These are positive numbers. मैं अभी बताता हूँ. With lambda i's all real and greater than or equal to 0, with ये number 1 condition है और number 2 condition है that they all, the square of them sums to 1. Let me explain what bipartite is. ठीक है, bipartite हम कहते हैं two system state. Let's say एक system है A, एक system है B. Lot of people make a wrong concept in their minds कि bipartite का मतलब है 2 qubit system. ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी है, वो भी bipartite है, but bipartite is more general than that. कि let's say ये qubit है, ये qubit है, ठीक है, 2 system हो गए, so it's a bipartite system. But you can have like 2 qubits here and 2 qubits here. तो लेकिन इन 2 qubits को आप jointly इनकी states की बात कर रहे हैं. So this IA is an orthonormal basis for this system and IB is an orthonormal basis for system B. Okay.
तो ज़ाहिर है ये 2 क्यूबिट्स हैं तो इनकी हिल्बर्ट स्पेस अपनी है, और उस हिल्बर्ट स्पेस के जो बेसिस स्टेट्स हैं वो आई बी हैं, इसकी अपनी हिल्बर्ट स्पेस है। एंड this can be, let's say, hydrogen atom, multi-level hydrogen atom, and this can be all the atoms in your laboratory. Okay, then this would be called environment and this would be called your system. जी थोड़ा सा फर्क है, और वो जो चीज है वो यहाँ भी एप्लीकेबल है कि जैसे इस सिस्टम की एक हिल्बर्ट स्पेस है, इसकी हिल्बर्ट स्पेस है, तो हमने उसमें कंपोजिट सिस्टम का जो हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि जो इनकी जॉइंट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट स्टेट्स कैन बी रिटन एज द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ ऑफ द हिल्बर्ट स्पेसेस ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, सो ये तो उसको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज, ये इनके दरमियान में टेंसर प्रोडक्ट की है जो नहीं लिखा हुआ। लेकिन अब ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन ये है कि ऑल लैम्डा आईज आर रियल ग्रेटर देन 0, रियल पॉजिटिव, एंड देयर स्क्वायर इज एडिंग टू 1। ठीक है, ये तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी आ सकता है, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। लैम्डा इज अ रियल ग्रेटर देन 0, उस हाइपोथेसिस में देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस आई, प्लस दैट वाज इवन मोर जनरल देन दिस इज आई, दिस इज जे, एंड यू हैव अ सम ओवर आई एंड जे। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर लेट्स से 2 क्यूबिट सिस्टम है, so your state, in general can be, let's say, iota under root 3, 0, 1, iota over, I don't know, 3 square root, 1, 1, iota over, maybe this is, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगी 1 plus 1, let me call it iota here. ठीक है, so उस hypothesis से this is a legitimate state and this is a legitimate state, that's no problem with that. हम ये कह रहे हैं कि इस स्टेट को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, in some orthonormal basis for A and some orthonormal basis for B. ये जरूरी नहीं कि 0, 1 वाली बेसिस, लेकिन कोई ऐसी बेसिस हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आसानी से बना सकता हूँ कि ये जो आयोटा है इसको मैं लिख दूं एक्सपोनेंशियल, जो बल्कि ये जो 0 एक बेसिस बना लें, आयोटा 0 और 1, ये सिस्टम ए की मैं बेसिस बना लेता हूँ और सिस्टम बी की बेसिस बना लेता हूँ 1 आयोटा 0। नहीं, अगर ये करते हैं तो फिर ये नहीं आएगी, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल, ये आयोटा स्क्वायर रूट, आयोटा स्क्वायर रूट। अभी देखें इस बेसिस में अगर आप इसको लिखते हैं ना, सो दिस विल देन बी इन दिस फॉर्म है। नहीं सेम तो नहीं, देखे ना ये साथ नंबर भी आ रहे हैं। लेट्स से द चेंज ऑर्डर इज आल्सो फॉर डिफरेंट बेसिस, लेट्स टेक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, द पॉइंट इज दिस कि अगर मैं इसको अब इंडेक्स दे दूं, लेट्स से 1, इसको इंडेक्स दे दूं 2, इसको इंडेक्स दे दूं 1, इसको इंडेक्स दे दूं 2, तो ये देखिए इन जनरल जो स्टेट है वो यूं लिखी हुई है। सो दिस स्टेट इन जनरल इज सम ओवर आई, सम ओवर जे, समथिंग आई जे, राइट, कि आपके पास दोनों तरह के कॉम्बिनेशन हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें सम सिर्फ एक इंडेक्स के ऊपर है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह से बेसिस बना रहे हैं कि सिर्फ सामने सामने के जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड देन बल्कि एक्चुअली इनसे भी you won't be able to get into Schmidt decomposition form. We'll see how we can transform that. So यहाँ पे जो भी तरतीब है दोनों सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। लेट्स से ये 0 है, ये 0 है, तो 0 0 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस है। ठीक, इक्विवेलेंट तो होती है। सो ये कोई, हम ये नहीं कह रहे कि कोई नई चीज है, वी आर सेइंग दैट कि किसी भी प्योर बाइपार्टाइट स्टेट को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी इक्विवेलेंट। तो ये कोई स्टेट डिफरेंट नहीं कर रहे,
ये स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे इसी स्टेट की बल्कि लेट्स डू एन एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग, थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाएगा। सो इसको अगर मैं देखूं तो इनमें ये 1 कॉमन आ जाएगा, सो दिस बिकम्स आयोटा ओवर अंडर रूट 3 0 प्लस 1 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 1 0। तो इसके नीचे मैं अंडर रूट 2 लगा देता हूँ, एक अंडर रूट 2 इधर लगा देता हूँ। और जो अब इसको मैं लिख सकता हूँ, लेट मी कॉल इट प्लस स्टेट। सो ये बन गया 2 ओवर 3 अंडर रूट आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 1 0। अब फर्ज करें मैं एक बेसिस कर लेता हूं, जो सिस्टम ए है उसकी बेसिस हम कर लेते हैं आयोटा प्लस आयोटा 1, और सिस्टम बी की बेसिस कर लेते हैं 1 0। नंबर 1 अभी I have to have them ortho normalized, so this is not this 1 and plus, they are not orthogonal. हाँ, तो ये आयोटा मैं इनके साथ लगा दूंगा तो लैम्डा आइसोरियल हो जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल दिस हैज दिस ट्रबल दैट दीज टू आर नॉट ऑर्थोनॉर्मल। सो मैं थोड़ी देर में आपको जनरल मेथड बताता हूँ कैसे हम कर सकते हैं, बट यू गेट द आइडिया। सो वी कैन राइट इट इन सच अ वे दैट दिस इज कि इन ये सामने सामने के बस जो करस्पॉन्डिंग कैट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनके रियल कोएफिशिएंट्स के साथ उस स्टेट को एक्सप्रेस किया जा सकता है। इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ बेसिस, ठीक है। ओके, सो अभी विल सी द प्रूफ, और प्रूफ से आपको मेथड का ही पता चल जाएगा। सो द पॉइंट इज के कोई भी जो बाईपार्टाइट सिस्टम है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी। In general, you don't have to have that. They can have different dimension. उस सूरत में there are ways to get with this के जो टेंसर प्रोडक्ट्स हैं उसको उस तरह से किया जा सकता है। प्लस जो है we can append with zero vectors जिसके कम vectors होते हैं। So with that we can do that. But for the moment, let's imagine that we have the same dimension. Okay. So let's see the proof first. The important चीज ये है कि this is only true for bipartite system, and bipartite system are much more general. They are not just two qubits, but they are like any two systems. So let's start with the proof, and then we'll see what are its consequences. Proof. Okay, so in general, जो fifth axiom है quantum physics का, it gives us that the state of bipartite system can be written like this. Okay, this is true in general, where your a, j, k's are complex numbers. Okay, so what we can do is this, that any linear operator with coefficients a, j, k, it can be written as a product of a unitary operator, a non-negative diagonal operator, and another unitary operator. So this is something the proof you can check it in any linear algebra book, but I can give you some motivation for that. So इसको कहते हैं singular value decomposition. जो eigen value decomposition है, it's just a special case. अगर आपके पास ये square matrix है, then we can write the matrix containing the eigenvectors, then the matrix containing eigenvalues, and then matrix containing the inverse of this thing. Okay, so with this
we can express any square matrix using eigenvalue decomposition. But in general, any rectangular matrix can be written like this. और उसमें it's very easy to make this thing non-negative real number. क्यों? क्योंकि आपके पास तब आइगन वैल्यूज आती हैं, वो तो जनरली ज़ाहिर है complex numbers होते हैं. But I can always write this complex number as magnitude, exponential, iota, the phase of this complex number. और ये जो phase वाला part है, आप इसका let's say square root ले लें, या ये phases सारी इसके आइगन वेक्टर के साथ लगा दें, या इसके साथ लगा दें, या इसका स्क्वायर रूट लेके एक स्क्वायर रूट इधर लगा दें, स्क्वायर रूट करस्पॉन्डिंग रो से इधर लगा दें. So you can make all of these numbers as non-negative real numbers. So in general, when you have this square matrix, finding the Schmidt form is essentially finding the eigenvalues and eigenvector. And then after finding eigenvalue, eigenvector, you keep the real part of eigenvalues in this matrix and take the phase part along the eigenvector, or so that we have this non-negative real numbers on the diagonal. And and if you have rectangular matrix, then this can be prepared, let's say, using some elimination methods, Gauss elimination method, or there are other methods like this to prepare the diagonal matrix for solution purposes. So us काफी सारे methods हैं जिनकी मदद से we can prepare this singular value decomposition. But once we have done that, I can then put this A in here and basically do like this: sum over jk, sum over I, uji, dii, vik. So this is the singular value decomposition for this. क्योंकि ये diagonals हैं सारे. So when you take this matrix multiplication, let's say this is some dii and this is some vik. इनका जो product है, you will get a sum over I. And then if this is some u ji, जो इसका result का product होगा, this would be sum over again this I. So I have this sum over I, uji. So these are the elements of this unitary matrix. This is the elements of this unitary matrix. And then let's multiply with the jk. Now we transform this basis with this unitary operator, unitary matrix, and we transform this basis with the this unitary matrix, and we keep this eigenvalues I as, let me call this dii as some lambda I, or ये जो sum over j है, for this j, let's write this some j tilde, and this k into vik some k tilde. So basically you have to find a unitary transformation for this basis and for this basis such that your resulting state is diagonal. And then जो diagonal entries हैं, you can easily make them non-negative, क्योंकि जो magnitude है वो आप रख लें, और जो phase part है you can take it along the basis vector. So the transformation essentially is trivial in the sense के इस form में लाने के लिए there's not much science or struggle that is behind there, and you can easily view it simply as the unitary transformation of these bases, so that your general state becomes the diagonal state. लेकिन इस जो decomposition है, इसका फायदा जो है वो बहुत ज्यादा है. We'll be using it many times, and also this will help us provide an intuitive way about thinking about physical systems. Okay, so any questions? In general तो और होता है, but there is a benefit in converting it into a form where all the iota parts go into the basis,
and you only have non-negative real number here. अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं. All right. Important चीज के साथ याद रखने वाली ये है कि bipartite doesn't mean two qubits. It means two physical systems. और हमारे इस कोर्स के अंदर यूजुअली वन ऑफ द सिस्टम विल बी रेफरिंग टू एज सिस्टम एंड द अदर वन एज द एनवायरनमेंट और समथिंग एल्स. Sometime, but this could be one qubit, this could be other qubit as well. Now, let me introduce some nomenclature. Number one, these bases, they are called Schmidt bases. So whenever I say that I have written a state in Schmidt basis, it means two things. Number one, it's diagonal. Number two, जो diagonal entries हैं वो सारी real positive है. जो number of non-zero lambda i's हैं, they are called Schmidt number. Now this, and there is another definition. If your Schmidt number is 1, unfortunately there is no agreed upon symbol for this Schmidt number, so I'll be just writing the total Schmidt number. If this is 1, we call the state unentangled. And if your Schmidt number is greater than or equal to 2, okay, ये fraction तो हो नहीं सकता, so either 1, 2, 3 something. So if this is 2 or greater than 2, we call the two systems to be entangled. Okay, so this is the definition of entanglement, sort of. All right. Okay. जो Schmidt नंबर है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये कि अगर आपके पास दो सिस्टम्स हैं, एक ये है और एक ये है, if you do any unitary operation on this thing or any unitary operation on this thing or any combination of unitary operations on this and this system which are independent of each other, Schmidt number doesn't change. And we can easily see, क्योंकि अगर let's say I do a unitary operation on psi such that I'm only doing some unitary operation on A and I'm doing nothing on B. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है I will have I, lambda I, something happening to this basis state, but nothing happening to this basis state. So जो non-zero lambda i's हैं वो उतनी रहेंगे because the basis changes, but nothing else happens, which has a physical consequence as well. अगर आपके पास दो systems हैं वो entangled हैं, so if you do any unitary operation on one of them, the entanglement is not going to go away. On the other hand, if you have a Schmidt number 1, that the two systems are unentangled, it means then you can do whatever you want, the unitary transformations of one system, you cannot entangle them. To entangle them, we use the word non-local. We need to have non-local operations on our systems to entangle them. That we should have unitary operations which are, dependent on each other. Okay. Let's now take a few examples. And then we'll see कि इसका फायदा क्या है. Suppose
let me write this system state. First करें, I have 2 qubit system, so each system is 1 qubit. So this is a state. First of all, is it in the Schmidt form or not? क्यों अब्दुल्ला? To see if it is Schmidt basis or not, remember we have to see if the state is diagonal or not in some basis. जरूरी नहीं कि जो बेसिस हमने लिखी है उसी में डायगोनल है. ये अगर मैं इसको इस बेसिस में लिखी 0 1 में, तो ये स्टेट तो बेसिकली इसको करस्पॉन्ड करती है. ठीक है, इसको डायगोनल फॉर्म में लिखें तो खैर ये वो जो एंट्री है वो ऑफ डायगोनल आती है. अलबत्ता अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करें कि जो पहली क्यूबिट है जो कि इस बेसिस में लिखी है, let's make a unitary transformation and let me make this as the first basis and this as the second basis. So let me call it prime. और जो दूसरी क्यूब, so this is my qubit A and qubit B, let's say, is still in this basis. ठीक है, so I can have a unitary transformation V like this 0 1 1 0. So जो ये V है, this can transform 0 to 1 and 1 to 0. अब ये देखें, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है लेट्स से 2, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, और ये so this 1 prime is actually, so this is my system, this one, and this is 0 prime. So this is number 2, this is number 2. So इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये स्टेट ये है. So that's why it's in Schmidt form. और इसका Schmidt नंबर क्या है अब्दुल्ला? 1, क्योंकि there's only one term in the sum. So this is an unentangled state, which means that you, अगर यहाँ से देखें तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो आपकी unentangled state है वो होती है जिसमें you can write the joint state as the tensor product of individual states. जी आपने पहले ज़ाहिर है कोई भी स्टेट है उसको Schmidt फॉर्म में पहले लिखना है, then you can see what's the Schmidt number. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्टेट देखूं, so अभी ये Schmidt फॉर्म में नहीं है. कैन यू सी व्हाई? क्योंकि दे आर डायगोनल. डायगोनल के जरूरी है कि आप एक दोनों सिस्टम की बेसिस लिखें और फिर आपके पास सिर्फ वही टर्म्स हो जो करस्पॉन्डिंग टेंसर प्रोडक्ट टर्म्स हैं. तो इसका अगर आप पहले की बेसिस लिखते हैं 0 और 1 और दूसरे की लिखते हैं 0 और 1, तो 0 1 बेसिस में तो डायगोनल नहीं है. बट इसका मतलब पहले हमें इसे किसी और बेसिस में ट्रांसफॉर्म करना होगा. सो वन ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई कैन इजीली डू, लेट मी ट्रांसफॉर्म दिस सिस्टम A to another basis in the plus minus basis. So उस सूरत में I can write this as plus 1 state. ठीक है ना, ये 1 कॉमन ले लें, ये 0 plus 1 over square root 2, so let's call this plus. अब ये जो है और ये A की और जो B की है वो फर्ज करें यही है, तो अब देखें ये डायगोनल है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी है विद 0 कोएफिशिएंट. ठीक है, सो नाउ आई कैन सी दैट दिस इज नॉट एन एंटेंगल्ड स्टेट. जी मैं लिख रहा हूँ A प्राइम माइनस, फिर बाद में आप मुझे सॉर्ट लेते हैं तो फिर तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, सेकंड मल्टीप्लाई करें, इंडेक्स तो मैच नहीं करना चाहिए. हाँ, इन जनरल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फर्ज करें कि वी एग्री that we are always going to write our states in a certain way, then we will always agree.
uncertain things, and that is the Schmidt number. उसकी वजह ये है कि इन जनरल तो जैसे इस स्टेट को आप इधर भी लिख सकते हैं, इस तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, इट्स द सेम स्टेट, बट दिस इज अ स्टेट दैट वी रेफर टू व्हेन वी से इज इट द स्टेट द Schmidt स्टेट और नॉट. सो जो Schmidt स्टेट है, ये Schmidt फॉर्म है, वो कोई ये नहीं है कि let me write like a set of all possible bipartite, फर्ज करें ये हिल्बर्ट स्पेस है बाइपार्टाइट सिस्टम की. अगर आप ये दोनों सिस्टम को वन क्यूबिट तो दिस टू क्यूबिट हिल्बर्ट स्पेस. So what the theorem says that all states in this Hilbert space can be written in that special form. It's not some subspace of the bigger Hilbert space. पहली बात तो ये याद रखें. Every pure mix नहीं, every pure bipartite state can be written in the Schmidt form. By the way, we can't say this thing about the tripartite system. अगर सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं, then in general जो Schmidt decomposition है वो पॉसिबल नहीं है. कुछ की पॉसिबल होती है, कुछ की नहीं होती. But for a bipartite system, every pure state can be written in the Schmidt form. So so in general ज़ाहिर है जब आप स्टेट लिखते हैं तो आप बेसिस कुछ भी चूज कर लेते हैं ना. Even they don't even have to have be ortho normal. आप कोई भी linear independent set ले लें जिसकी dimension same है, तो you can write the state. And you can do math with it, whatever you want. But this is one special way in which we can, have some advantage. अभी तक advantage मैंने बताया नहीं, अभी तो just ये वो definition है ना, हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है state को यूं लिख रहे हैं, उसको हम कहेंगे unentangled and for example let me write another state. So this state for example is already in the Schmidt form. क्योंकि 0 0 1 1 it's diagonal, the coefficients are non-negative, and they are real numbers, so this is in Schmidt form. So एक चीज तो मैं कह सकता हूँ this is entangled state because my Schmidt number is 2, right? So अभी तक हमने जो Schmidt form की उससे मैं बस ये अगर आपको एडवांटेज का तो हम we can identify the entangled and unentangled state, but that's not much to say. अभी जो real advantage is going to come later, ठीक है, but still this provides us a way in which we can at least partition the bipartite state into two sets now. One is entangled and the other is unentangled set. Unentangled वो है that I cannot write as a product of two individual system state. जी नहीं, देखें जो दोनों ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिस की वो इंडिपेंडेंट है. अगर आप देखें तो जो v है वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है v से, और जो 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 एक बेस और दूसरी बेसिस u वेक्टर से u से ट्रांसफॉर्म, दोनों इंडिपेंडेंट है, कंट्रोल नहीं है, ठीक है. ओके, अच्छा इसी पॉइंट पे अगर हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस a few more definitions. Bell states जो हैं, these states, this is called a bell state. This is one bell state which is entangled. There's another bell state which is 0 1 plus 1 0. There's another bell state 0 0 with minus, and then there are 4 possible combinations of these 0 zeros. और अगर आपके पास bipartite system जो है वो 2 level से ज्यादा है, so then we can have a Schmidt number, let's say 3. For example, this system itself is a 2 qubit system, ठीक है, and this let's say is a 3 qubit system, or could be 2 qubit system. So then this has 4 possible state. तो उसके लिए आपको इन सब की जो आइगन बेसिस है वो पहले you will have to let's say that this is my one basis, the let's say 0 1 is your 2a, 1 0 is your 3a, and 1 1 is your 4a. तब ये this is ये इसकी basis इसी तरह you can write the basis for this, and then you will have to convert the state into diagonal form where we can talk about the Schmidt basis. So then the Schmidt number, it can be greater than 2 as well.
ठीक है, इस एग्जांपल से आप ये ना समझे कि स्मिथ नंबर या 1 होगा या 2 होगा, ये उसी वक्त होगा अगर आपके इंडिविजुअल सिस्टम सिंगल क्यूबिट्स हैं, and usually we can have multi-level systems as subsystems, so the Schmidt number can even go beyond 2 as well. Okay, now let's come to the real advantage of why we need this thing. There are two advantages and there are two concepts that I first like to introduce, and number one is what we call the reduced density operator. Let's say we have two systems, system A, B. Again, this is a bipartite setting, and suppose we have a density operator rho AB, which characterizes the state of this system. Now you see this is a notation which can take care of mixed and pure states as well. The Schmidt decomposition I'm stressing again, it's only valid for pure states. But let's say now we have a general bipartite system which can be in a pure or in a mixed state, and suppose it's then its state is given by the density operator rho AB. We claim that the density operator of system A is given by tracing out your density operator of the whole system over B. And similarly, the density operator of system B is given by tracing out your total density operator over A. Let me first give an example of what we mean tracing out of over one or the other system, and then I will show its consequences or the reason here that why we can do that, then it will come later. Okay, so let's take an example. The first example is the simple one. Suppose your joint density operator is already a tensor product of your individual density operator. फर्ज करें आपने ये बनाया ही इन दोनों के प्रोडक्ट से है. So you knew this density operator, you knew this density operator, and then you wrote the total density operator as the tensor product. Then I can see easily from here, okay, if I find trace of only trace over B only, I don't do anything to this, so this comes along as it is, and then we have to find trace of this operator, but the trace of rho is 1, so this is 1, so I get rho A. So similarly, if I want to get rho B, I can find the trace of this operator only on the A part, so I get rho B. Good. Let's take another example, slightly more complicated. Okay, अगर मैं सिर्फ इसका B का trace find करूं तो इसका trace 1 होगा, so I'm left with rho A. उससे पहले असल सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है कि finding the trace over one or the other. So when we say trace over B, it means that we are saying that trace only on the part which represents, you know, the system B. ठीक है? ये थोड़ा सा ये दूसरे एग्जांपल में और भी क्लियर है. इससे जो trace है, it means that we are saying find a trace of operator only the A part. टेंसर प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर आपके पास लेट्स से कोई दो मैट्रिसेस हैं 1 2 3 4 टेंसर 0 1 1 2, so it's a total big matrix, so 1 into all of these, 2 into, so the usual way. Okay, let's take the Bell state, and let me take this 0 0 Bell state, जो first Bell state है. So this is an entangled state of 2 qubits, और फर्ज करें एक ये क्यूबिट है और एक ये क्यूबिट है. And suppose
you want to see that what would happen if you only want to work with this qubit, and either you don't have access to qubit B, or you don't care about it, or there is something. And usually it is the situation that we don't have any control or access to this one. फर्ज करें qubit A जो है ना, ये आप का atom है which you are trying to work in your lab, and this second qubit with this is entangled. It's part of the system. कोई आपने इसको किसी वैक्यूम ट्यूब में रखा हुआ है या किसी वैक्यूम चैम्बर में, so this second qubit is somewhere over there, but you're only working with this thing. So it means then you want to find out the density matrix of this qubit A. So uske liye from this way I first need to write its density operator. So iska density operator kya hoga? Iska density operator hoga ye wala, right? Kisi bhi pure state ka density operator, it's simply the state ket with state bra, and 1/2 इसको इसके उलट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, you get 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 कल भी आ गया आपके पास दोनों का रो. अब let's say I want to trace it over B because I'm interested in finding the state of this qubit. What does this mean? This means that आप इसको देखें. So I have to find the trace over system B. और उसके लिए let me just recall from the previous thing. So first करें आपके पास एक state है, एक density matrix है, U and let's say some V tensor U prime V prime. ये जो है इसको आप U भी लिख सकते हैं, by the way. You can write it U prime V prime. When you see this, really it means this. ये जो टेंसर प्रोडक्ट है इसका इसके साथ इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, या इसी को U टेंसर U प्राइम and V टेंसर V प्राइम. ये तीनों एक ही चीज की रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज द शॉर्टेस्ट हैंड और ये जो है दिस इज द फुल हैंड नोटेशन. अब जब मैं कहता हूं कि आई वांट टू फाइंड ट्रेस ओवर बी सिस्टम, सो this part represents system B, this part represents system A. So finding a trace B is actually finding trace over system B is doing nothing to this thing and finding its trace. और ये जो trace है, we already know this means that this is V prime U prime. Okay. क्योंकि अगर कोई ऑपरेटर भी हो तो that operator is sandwiched between the two, but if there is no operator identity, then this is just inner product of the state. So इसका मतलब है कि जब आपके पास ये लिखा हुआ है, so अगर आप ट्रेस सेकंड सिस्टम पे फाइंड कर रहे हैं, you do nothing to the first one, and for the second one you take the inner product. ओके अब्दुल्ला, ये बताएं पहली टर्म क्या आएगी? हाँ, इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं बी पे ट्रेस दूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 0 0 और साथ में ये 0 है और ये 0 है, सो 0 0 इनर प्रोडक्ट प्लस इसका ये 0 1 आ गया और ये 0 और 1 का इनर प्रोडक्ट आ गया. ये 1 है कैट में, सो 1 यहाँ पे आएगा, ये 0 है और इसी तरह इसका आ जाएगा ये 1 0 वैसे ही और ये 1 और 0 का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा 0 1, ये 1 1 वैसे आ गया और इस 1 1 का इनर प्रोडक्ट और ये बन गया हाफ. ये 1 है, ये 0 है, सो दिस गोज अवे. ये 0 1 भी 0 है, दिस गोज अवे, सो ये 1 है. सो आई एम लेफ्ट विद. सो पहली चीज तो ये देखें
कि जो टोटल स्टेट है सिस्टम की वो प्योर स्टेट है दोनों क्यूबिट की, इट्स एन एंटेंगल स्टेट। लेकिन क्या ये प्योर स्टेट है? इट्स मिक्स स्टेट। क्यों मिक्स स्टेट का वैसे पता कैसे चलता है कि इसका ट्रेस तो 1 है, लेकिन इसका स्क्वायर लें और फिर उसका ट्रेस फाइंड करें। और चूंकि ये ऑलरेडी डायगोनल है, ठीक है, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स ऑलरेडी, हाफ 0 0 हाफ। अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो आई विल गेट 1/4 0 0 1/4। सो इस अब स्क्वायर का ट्रेस लें अगर आप, तो यू गेट हाफ विच इज लेस देन 1। सो अगर स्क्वायर का ट्रेस हाफ 1 से लेस हो, द स्टेट इज मिक्स स्टेट। सो इट मीन के, और अब लेट्स से इफ यू स्टार्ट मेकिंग मेजरमेंट्स, अब इसके ऊपर जब इस क्यूबिट पे आप मेजरमेंट करते हैं, समटाइम यू विल गेट 0, समटाइम यू विल गेट दिस क्यूबिट इन 1 स्टेट। Okay, so which is essentially like the noisy state. So the whole system is in entangled state, in a pure state, but when you look only at the part of the system, it behaves as if it's in a mixed state, and there's noise in the measurement, and that is actually the reason of all noise in the world. In whatever experiments or measurements you do, the noise is there only because your system is entangled with something that you are not measuring, that you are not able to take into account into the measurements. जी, ये वाला देखिए, जब ट्रेस इसके ऊपर फाइंड करना ना, तो इसको कुछ नहीं कहना, ये वैसी की वैसी आ गई। और जिस पे ट्रेस फाइंड करना है उनका इनर प्रोडक्ट लेना, बिकॉज ट्रेस of this, density, these two operator cat bra is this inner product. Similarly हर term कैसे ही ले लिए। So this is what we mean by tracing out the B system. Okay, any questions so far? अच्छा, जो इसकी रीजन है कि why do we do the partial trace is because we can show mathematically that if we take the partial trace, then the measurements done on the joint system, but only for the qubit that or for the system that you are looking at, is the same as if you do the measurements only on the subsystem. मैं इसको mathematically थोड़ा बाद में देखता हूँ, but I want to get back to the benefit of Schmidt decomposition again, and this is what we call purification. जी जी। हम्म। नहीं, वन पार्टिकल हिल्बर्ट स्पेस जरूर। हाँ, मतलब इवन अ सिंगल पार्टिकल कैन बी इन अ मिक्स स्टेट। हाँ, क्योंकि देखिए दो तरह है इस चीज को व्यू करने का तरीका। एक तो ये है कि यू इमेजिन यू हैव एन oven or a preparator or somebody or some sender जो के आपको एक एक करके क्वांटम सिस्टम भेज रहा है। फर्ज करें इलेक्ट्रॉन से, और वो किसी इलेक्ट्रॉन को अप कर देता है, किसी को डाउन कर देता है, एंड देन व्हेन यू गेट a lot of them, some of them are up, some of them are down, and you can have some probability कि 30% up, 70% down. That's one way of thinking about this ensemble of pure state. So this is a mixed state, but this is an ensemble of pure state. But there is another equivalent way of thinking about the same thing. Okay, you have only one system that is prepared by that person and it's coming to you. So एक electron उसने prepare किया, वही आपके पास आ गया, and there's a 30% chance it's up and 70% chance it's down. You have only one system,
but this is also in an ensemble of pure states. नहीं पार्टिकल तो है, सिस्टम तो है, सो पार्टिकल लेट्स कॉल इट अ सिस्टम, सिस्टम तो है, बट there is a classical probability associated with it कि ये किस क्वांटम स्टेट, किस प्योर स्टेट के अंदर. So even a single system can be in a mixed state. All right, so let's come to this concept of purification, and we will see why the Schmidt decomposition is important. So the concept is this: that suppose I have the density operator of my single system given by this. अच्छा, उसमें गोइंग बैक टू द रिड्यूस्ड डेंसिटी ऑपरेटर अगेन, जब आप किसी एक सिस्टम पे ट्रेस आउट करते हैं तो जरूरी नहीं कि रिजल्ट हमेशा मिक्स्ड हो, ये जहन में रखें, ठीक है, बट इट कैन बी मिक्स्ड, इट कैन नॉट बी मिक्स्ड. फॉर एग्जांपल, इफ माय joint state of two system was, let's say, 0 0, so it mean my density operator was 0 0 0 0, right? ये joint density operator है. And if I want to find the density operator for only system A, I can trace it over B, my total system over B. तो इसको मैं trace करूंगा तो ये 0 0 वैसे ही आ गया, और इस 0 0 का inner product 1 है. So this is my density operator for single system, and this is not a mixed state, this is a pure state. हाँ, if your two systems were entangled, then the if you only look at one system, one subsystem, then the system comes out to be in a mixed state. But in general, if you start from a bipartite density operator and you find the density operator of subsystem, it may or may not be in a mixed state. Okay, so let's come here. Now this is a sort of a reverse process, that I have the density operator of a subsystem, and in general, again, it can be a pure state, but it can also be a mixed state. The purification hypothesis say that I can always think about some joint system AR, this is called for reference, of which is in a pure state, and I can imagine this density operator of this system to be derived from the pure state of this joint AR system. So this rho A is nothing but obtained by tracing out the reference system from the density operator of this rho AR, such that rho AR or AR is in a pure state. This is called purification, because we can link every system, whether in a mixed or a pure state, to a bigger system which is in a pure state, and this is just acting as the subsystem of that bigger pure system. Okay, we can see the proof very easily, and that's where the Schmidt decomposition comes in. Let R has same Hilbert space as A. Suppose कि ये अगर 10 qubit system है, so I take this reference to be 10 qubit system again, that they both have the same Hilbert space. Then I can write this bipartite state in a Schmidt form like this. So this is the basis state for the Hilbert space of R, and this is for the Hilbert space A. But I have chosen the coefficients which are related to this system. Okay,
and we can prepare the density operator rho AR as sum over ij, क्योंकि इसको इसी से आप outer product इसकी कर लें. So it would be there's a sum over I and then there would be a sum over j. Okay, let me write the intermediate step. ये sum over I जो है ये इसको आप outer product कर लें इसी के साथ pj ja jr. ठीक है. So which is sum ij pi pj ia ja tensor ir jr. ठीक है. अब इससे when I try to get row A out of it by tracing out the reference system, this will give me IR, JR inner product, which would be non-zero only when I is equal to J. So which would make this sum over I is equal to J only, and this PI will be PJ, and the square will go with square root, and I'll recover this system. अब सवाल यह है कि इसमें मैंने ये कैसे प्रूव किया कि दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्योर स्टेट. क्यों अफसर? देखिए हमने हाइपोथेसिस ये दिया था कि एनी सिस्टम ए वेदर इन अ प्योर और अ मिक्स स्टेट कैन बी थॉट ऑफ एज अ सब सिस्टम ऑफ अ जॉइंट system with another reference system, and such that they are both in a pure state. Jointly they are in pure state, but when we are looking at the subsystem, it is in a mixed state. So where did I prove that I was able to show you? So पहली बात है everybody agrees कि अगर मैं इसको R पे trace करूं, so I'll get back this row A, क्योंकि R पे trace करेंगे तो ये IR और JR का dot product होगा ना, तो this is क्योंकि ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस अज्यूम किया है, सो जीरो उसी वक्त होंगे व्हेन i is equal to j, नॉन जीरो उसी वक्त होंगे व्हेन i is equal to j, एंड i is equal to j मीन द सम विल कोलैप्स टू ओनली i is equal to j. ये pi स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, एंड दिस वुड बी द सेम एज दिस वन. सो द प्रूफ इज देयर, बट वेयर इज द प्रूफ दैट दिस रो a came from a joint system in a pure state? कौन सा? नहीं, तो मैथमेटिकल स्टेप है, इसके अंदर है. हम वहां में हमने देखा है कि एनी प्योर स्टेट कैन बी रिटन इन अ स्मिथ डिकम्पोज्ड फॉर्म. सो दिस इज अ प्योर स्टेट. हमने स्टार्ट ही प्योर स्टेट से किया. जिसको भी आप कैट की फॉर्म में लिख लेते हैं वो होती प्योर स्टेट है. ठीक है ना. और स्मिथ फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज आई नीडेड कोएफिशिएंट्स दैट आर नॉन नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर. क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑपरेटर के अंदर ये सारे नंबर नॉन नेगेटिव पॉजिटिव हैं. ये दे आर प्रोबेबिलिटीज, राइट? So that's why my starting state was the Schmidt decomposed form. और उसके अंदर जो है I have these pi square root. अगर मैं इसको प्रिपेयर ही इस तरह से करूं कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं pi square root के बराबर हैं, then I see कि when I trace out over the reference system, I get this system rho A. Okay, any question regarding this? Let me give you a summary. I'm really amazed at this connection. अब पता नहीं आप लोगों में से कितनों को इस चीज की समझ आई है. आप you able to share this amazement कि noise जो है is just our inability to measure the pure system. Every अगर आप पूरी यूनिवर्स जो है उसको एक सिंगल क्वांटम सिस्टम के तौर पे लें, it's in a pure state, which means that of course pure state को भी when you do measurement, your pure state can sometimes collapse to one eigenstate or sometime to the other eigenstate, but that's your simply inability sort of
uh, to measure your quantum state. And when we have a system in the lab, let's say किसी qubit के साथ या किसी atom के साथ किसी के साथ we are trying to do some experiment, so that system is inevitably part of a larger system, and as a whole it's in a pure state, but only when we are looking at some subsystem, it's behaving as if it is in a mixed state, because it's an open system. It's just able to entangle with something else. No, and then if the system is entangled with something else, the system is in a mixed state, simply because we are looking at the part of the system. And the other way around, the purification theorem here, this is telling us that every subsystem, whether pure or mixed, can be thought of as part of a larger system which is in a pure state. You can get it from there. And the operation that connects both of these things is the partial trace. If you take the partial trace of the bigger system, then you can get the density operator for the subsystem. And if you want to link the subsystem to the bigger system, you have to make sure that whatever your bigger system is, whenever you take its partial trace, you get the density operator of the system that you are linking it with. And let's do the final bit, which is actually I prepared the lecture and then I'm giving it in reverse. Okay. Earlier I thought, okay, I'll start from where I'm, right now, but then I thought, okay, maybe coming from their side, the other side. Okay, so ये वही चीज है जो आप में से कुछ लोगों ने असल में पॉइंट आउट भी की थी, and I just want to clarify one thing. You can just call it clarification. Yeah, the more standard name is unitary freedom in ensemble. When you look at this density operator, what do you think of? आप सबीता है या ज़हरा? आप दोनों लगता है एक दिन वो आती है एक दिन आप आती है. आपका क्या ख्याल है? When you look at this density operator, what comes to your mind? I mean, how do you picture this qubit to be? अच्छा चले आज के आपने वो वीडियो भी नहीं देखी? वीडियो अपलोड कर दी है? आपका क्या ख्याल है? आपका क्या नाम है? और आज आप सवेरे हैं, ठीक है. चले जो लोग पिछले लेक्चर में आए थे, when you look at this density operator, what do you think? I mean, what comes to your mind? चले मुनीर से पूछते हैं, अनवी सादा ने एक मिनट. क्यों मुनीर? Spectral decomposition is something else. मैं इसके फिजिकल पिक्चर की बात करूं, जिस तरह हमने डेंसिटी ऑपरेटर जब इंट्रोड्यूस किए थे. क्यों हैदर आप? पहली बात है, ये प्योर स्टेट है, मिक्स स्टेट है? ट्रेस तो सबका वन होता है यार, प्योर का भी वन होता है, मिक्स का भी वन होता है. नहीं, स्क्वायर करके कैसे? अगर एक चीज ऑलरेडी, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर के लिए आपको वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डायगोनल मैट्रिक्स उसका स्क्वायर दुनिया का सबसे आसान काम है. वो सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट के स्क्वायर करना होता है ना. तो इसके स्क्वायर का ट्रेस वन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. तो ये मिक्स तो है, प्योर नहीं है. पहली बात तो ये आपके ज़हन में आनी चाहिए. चलो अब्दुल्ला आपसे पूछते हैं, आगे इसके बाद आपके ज़हन में क्या आ सकता है? ओके, ये बात किसके ज़हन में आएगी कि we can imagine this qubit to be in state 0 with probability 75% and in state 1 with probability 25%.
I mean, can we think about this state like this or not? आपके होमवर्क में एक सवाल है, अगर आप लोगों ने वो देखा है, तो उसमें आपको एक सिस्टम है, उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, आपसे कहा गया उसका डेंसिटी ऑपरेटर लिखें. So if I ask you this question, okay, there's a qubit which has 25% probability, classical probability of being in state 1 and 75% probability of being in state 0. तो उसका density operator क्या होगा? नहीं 75 है ना, यही होगा ना. तो सवाल ये है, can we go in reverse? If the density operator is given over here, can we think of this as representing a qubit in a state 1 with 25% probability and state 0 with 75% probability? Few many. The answer is no. Okay. You can come from probabilities to this state, but once the state is given, you can't say okay, it means in reverse. And there's a reason. And the reason is this, that I can write exact this same state in this like this as well. Where A is equal to 3/4, 0, and B is equal to ये पर दो नॉर्मल बेसिस है, ठीक है, ए बी. सो सेम इस यही जो डेंसिटी मैट्रिक्स है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है बाय चूजिंग अनदर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. एंड स्टिल दिस इज अ मिक्स स्टेट, क्योंकि ये डायगोनल है. अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो 1/4 हो जाएगा, और उसका ट्रेस लेंगे तो हाफ आएगा. Mixed state exactly equal to each other except the bases are different. But here अगर आप वही physical interpretation इस पे apply करें, then this means the system is 50% in state A, 50% in state B. So जो reverse interpretation है वो possible नहीं है. If you start with the physical description, अगर आपके पास एक system है, you can write its density matrix from that knowledge. But once you have density matrix, it can represent many ensembles. Those ensembles are related with each other in such a way that the basis vector are related by a unitary transformation. Actually, these ABs can be found by the unitary transformation on this one. You can check that this is a unitary matrix. So this is called the unitary freedom in the ensemble. Because in general, any density matrix like this can be written in other basis such that these these PIs change. I have the proof, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि प्रूफ से ज्यादा आप लोग जो फिजिकल सिग्निफिकेंस तो समझ मुझे उसमें लैक कर रहे हैं. So I'm not going to describe the mathematical proof because it's trivial and it's not going to do much. So let's try to make summary of the stuff that we have so far for density matrices. जी बिल्कुल ठीक है. So यही मैं कह रहा हूँ कि once you have the density matrix, this is equivalent to many other representations, and we cannot attach a physical description that this density matrix represents a system in a classical ensemble of like this, that 0.75 probability of being in state 0 and 0.75
0.25 probability of being in state 1. So this interpretation is not correct, because this means this is equal to this. You can check mathematically, but this tells us something else. So the same density matrix represents many different ensembles. But fortunately, all those ensembles are not arbitrary. Their basis vectors are related by the unitary transformation. So that's what we mean by unitary freedom in ensemble interpretation. You can come from here to here, that if we describe a state to you, you can write a density matrix for that. But from the same density matrix can represent other ensembles as well, whose bases, whose states are related by a unitary transformation to the states of the previous ensemble. जी कौन सी हाँ हाँ infinite number of direction. अब ब्लॉक बॉल की बात करें ना कि we can write any density matrix like this, I plus r dot sigma vector over 2, where this r vector is r cos theta by 2 cos phi cos theta by 2 sin phi sin theta by 2. So in general, the state of a single qubit, a two-level system, can be represented by a vector that has a magnitude r less than 1 for it to remain positive. And और उसका जो एंगल है इसके साथ, लेट्स से थीटा, और जो इसके ये प्रोजेक्शन का एंगल है एक्स प्लेन में फाई. With this we can represent any two-level system in this ball. अगर वो pure state है, so this vector would lie on the surface of this ball. It's called block sphere for r is equal to 1. और अगर r less than 1 है, then it's a mixed state and the vector is somewhere inside. नहीं, ये जो पिक्चर है, दिस इज ओनली फॉर 0-1 बेसिस. ठीक है, दिस इज फॉर फिक्स बेसिस. So this is, let me go to 3. I haven't thought about it, but I think we can discuss it very easily. So जो ये पिक्चर है, this is for psi is equal to I plus rho dot sigma, where the sigmas are specified in a certain basis. ठीक है, अगर ये जो यूजुअली पॉली ऑपरेटर्स हैं, जैसे हम 0-1 बेसिस में करते हैं, देन ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर 0-1 बेसिस, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट 0 वेक्टर एंड दिस रिप्रेजेंट 1 वेक्टर. और सिमिलरली जो आइडेंटिटी है, ये भी 0-1 बेसिस में है. हाँ, सो लेट्स टेक अनदर थिंग. फर्स्ट करें कि आप जो अपना पॉली ऑपरेटर्स हैं, उनको सिग्मा 0-1 बेसिस की बजाय किसी और basis में express कर. They are still poly operator, but the basis is no longer 0-1. It could be some other basis. And in that case, of course, this R is now different from this R because the bases are different. And then for the same state, I might have a vector over here, and then this vector is over here. But we do know कि जो इसकी basis है और जो इसकी basis है, they are related by a unitary transformation in a certain way. So actually the trouble is कि जो unitary transformation, it's not exactly on the basis. The unitary transformation is basically on the square root pi into psi I. इस basis के ऊपर unitary transformation है. But neglecting that little bit detail aside, so there's a unitary transformation that relates this block ball to this block ball. And that can be worked out, that it would be the same. In that case, then these are the two basis vector in the new basis.
बिल्कुल चेंज। क्यों? हम्म। आप इस चीज को भूल जाओ, वैसे ही जनरल वेक्टर की बात करते हैं। आपका ये फिजिकल वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं ये बेसिस लेता हूँ तो मेरे कुछ कंपोनेंट्स आते हैं इस आर के, एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग। अगर मैं बेसिस ये ले लेता हूँ तो जाहिर है मेरे जो कंपोनेंट्स हैं इन डायरेक्शन के अलॉन्ग वो बदल जाएंगे, सो माय वेक्टर वुड चेंज। हम्म। हाँ, मतलब कि ये जो है दिस विल नाउ रिप्रेजेंट सम जीरो प्राइम एंड दिस वुड बी सम वन प्राइम। अगर जीरो वन को चेंज नहीं करना फिर तो कुछ भी चेंज नहीं किया, वो तो वही वही रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली एसेंशियली व्हाट वी आर सेइंग कि ये है। और यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये जीरो वन को यूनिटैरली कहीं वो करेगी ना, रोटेट। सो एसेंशियली यू रोटेट इन अ सर्टेन वे, सो योर जीरो वन गोज समवेयर एल्स एंड देन द नेक्स्ट वेक्टर जो भी यहाँ पे आता है यू विल कॉल दैट जीरो प्राइम। और जो यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये वेक्टर भी कहीं और चला जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी गुड क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी तक? क्यों मुनीब? ठीक है। ये आपका नाम बताया, बाकिर? नबील। तो नबील आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है यार, प्रैक्टिस के लिए तो एक तो लेक्चर्स बहुत करें। अगर पहली चीज तो है कि आपको फिजिकल तो सेंस कोई बनानी चाहिए चीजों की। जो मैथमेटिकल चीजें हैं वो तो आती हैं और आ ही जाएंगी वो, और वो इतनी मुश्किल भी नहीं होती सीखनी, ठीक है। आपने वो मशीनरी सीखनी है ना कि इधर मल्टीप्लाई ऐड वगैरह कैसे करना है। तो कोशिश करें कि जो फिजिकल इंट्यूशन है वो बनाएं, और उसके लिए बुक पढ़ें। प्रॉब्लम के अलावा जो थ्योरी लिखी हुई है उसको पढ़ें, समझें। और अगर हो सके तो किसी बंदे से डिस्कस भी करें, ठीक है। अक्सर का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लोगों से डिस्कस करने से बेहतर होते हैं, या किसी को सुनने में वो किसी और के लेक्चर देखें, ठीक है। तो ट्राई टू डेवलप सम फिजिकल कनेक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग हियर। बाकी जो मैथमेटिक्स है इसके लिए वो तो सिंपल सा ही है सारा। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और लीनियर अलजेब्रा, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो आप होमवर्क के प्रॉब्लम्स करें। और अच्छा, इस ये जो आज का लेक्चर है ना, इसके लिए अगर आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए तो एक्सरसाइज नंबर है 2.79 से लेके 2.82 तक। ये तीन चार प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल से हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ हो सकता है प्रूफ्स वगैरह से डील करें, तो मैंने प्रूफ्स आज स्किप किए हैं। आई सी अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वी कैन डू देम लेटर। हाँ, क्लास में मैं यहाँ पे नहीं हूँगा, बॉस होंगे, वो आपसे लेंगे। सॉरी फैजान, अब्बास अगर तो खुद अपना पेपर, ठीक है।